Hello student, how are you? Today I am going to teach you English subject. Student, English subject में आज मैं आप लोग को वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि वॉवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। स्टूडेंट, टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, 26 लेटर्स, जिसमें 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। तो आज मैं आप लोग को वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन पढ़ाऊंगी, आप लोग ध्यान देंगे। Student, vowels and consonants. स्वर और व्यंजन। A, E, I, O and U are called vowels. ये स्टूडेंट वॉवेल्स का डिफिनेशन है स्वर का। ये देखिए, A, E, I, O and U are called vowels. A, E, I, O and U को वॉवेल कहा जाता है। अब स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट A, E, I, O। स्टूडेंट, A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी जितने लेटर है उन्हें कंसोनेंट कहा जाता है। All the letters except O, A, E, I, O and U are called consonant. स्टूडेंट, व्हाट इज कंसोनेंट? ये देखिए, ऑल द लेटर एक्सेप्ट A, E, I, O and U are called consonants. A, E, I और U के अलावा शेष लेटर्स को कंसोनेंट कहा जाता है।
अब स्टूडेंट सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल W and Y are called semi vowels. W and Y are called semi vowels. When they are in the beginning of a word, they are called consonants. When they are not in the beginning of a word, they are called vowels. Student, W and Y are called vowels when they are in the beginning of a word. जब वे शब्द के पहले रहते हैं तब कंसोनेंट कहलाते हैं and they are called consonant. लेकिन when they are not in the beginning of a word, लेकिन जब वे शब्द के पहले नहीं रहते हैं आरंभ में तो वे वॉवेल कहलाते हैं. ये सेमी वॉवेल है. स्टूडेंट, जब वे शब्द के आरंभ में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, लेकिन जब वे शब्द के आरंभ में नहीं रहते हैं तो वे वॉवेल्स कहलाते हैं, वॉवेल कहलाते हैं. जैसे स्टूडेंट W से हम लोग लिखते हैं WOLF वुल्फ, YAAK याक. तो या जो है कंसोनेंट है, व्यंजन है, और वह भी व्यंजन है. लेकिन अगर COW काउ लिखते हैं तो वहाँ पर ऊ, W का उच्चारण ऊ हुआ. और जैसे और यह वाई जब शब्द के आरंभ में रहेंगे तो कंसोनेंट होंगे. वाई से येलो होता है, यास्ट होता है. लेकिन अगर वही BOY वाई तो वो शब्द के लास्ट में हुए तो वे कंसोनेंट नहीं होंगे, वॉवेल होंगे.
बॉय, बॉय हम कैसे लिखते हैं? वो आकार, उस पे चांद ऊपर, अर्धचंद और य, वाई। स्टूडेंट, ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन आपको समझ में आई? इसे आप कॉपी पे लिखेंगे और इस डिफिनेशन के याद करेंगे। एक बार मैं दोहरा देती हूँ। वॉवेल, ए ई आई एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। Consonant, all the letters except A, E, I, O and U are called consonants. Semi-vowel. W and Y are called semi-vowels. When they are in the beginning of a word, they are called consonants. When they are not in the beginning of a word, they are called vowels. Okay, students, इसे बनाएं। कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। और स्टूडेंट्स, आप अपने इस स्कूल के द्वारा बनाए गए न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, और होमवर्क बना के व्हाट्सएप पे सेंड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।